हेलो एवरीवन, आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि एकेटीयू के 2023-24 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे डेटा 2050 रिक्वायर्स 4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज। बेस एड्रेस ऑफ द डेटा इज 2000। डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ डेटा 1010 व्हेन द एरे इज stored as रो मेजर एंड द कॉलम मेजर। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि इसमें जो वैल्यूज गिवन है उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो इसमें डायमेंशन 1 गिवन है और दैट इज इक्वल्स टू 20। डायमेंशन 2 गिवन है जिसको हम कह रहे हैं 50। अगर मान लीजिए कि हमें लोअर बाउंड गिवन नहीं है एरे का, तो हम मान लेते हैं कि लोअर बाउंड हमारे एरे का 0 है। सो L1 भी 0 है और L2 भी 0 है। फाइन। लोअर बाउंड 1 इज 0 एंड लोअर बाउंड 2 इज ऑल्सो 0। इसमें बता रहा है कि नंबर ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड या नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ वन एलिमेंट इज 4 बाइट्स। और इसका जो बेस एड्रेस है, दैट बेस एड्रेस इज 2000। रो मेजर ऑर्डर का अगर हम फार्मूला देखें, सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द रो मेजर ऑर्डर। सो फार्मूला ये कहता है कि जो ए आई जे का जो एड्रेस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू बेस एड्रेस अल्फा प्लस इफेक्टिव इंडेक्स 1 मल्टीप्लाइड विथ डायमेंशन 2 प्लस इफेक्टिव इंडेक्स 2 मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ द स्टोरेज पर एलिमेंट। तो अब E1 फाइंड करते हैं। व्हाट इज द E1? E1 हियर विल बी इक्वल टू दिस 10 माइनस lower bound is 0. Or what will be E2? E2 will be equals to this 10 minus 0. So this is the effective index. Okay, so this will be equals to 10. This will be equals to 10. Formula में अगर हम adjust करें, so alpha is equals to base address that is 2000 plus E1 means 10 multiplied with dimension 1. So dimension 1 is, sorry, dimension 2, that is 50. And then E2, effective index 2. So that is equals to 10 multiplied with number of bytes that is equals to 4. सॉल्व करें इसको तो 2000 plus 510 multiplied with 4. So this is equals to 2000 plus 2040. It means 4040. So this is the address in the row measure order format. कॉलम मेजर के लिए करते हैं इसको। सो कॉलम मेजर ऑर्डर में जो एड्रेस होगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस, नाउ हम सेकंड डायमेंशन से वर्क करते हैं। सो सेकंड डायमेंशन के लिए E2 मल्टीप्लाइड विथ डायमेंशन 1 एंड देन प्लस E1 and whole multiplied with number of words. So alpha here is 2000, E2 here is 10, dimension 1 is 20, and then effective index 1 is E1 is 10 multiplied with number of words that is equals to 4. So this is equals to 2000 plus 210 multiplied with 4. So this is equals to 2840. So this is the address. Thanks for watching this. We'll take similar questions.